तथा प्रथमोध्याय एकदा मुनिः सर्वलोकहिते रमतः सुमन्ये नैमिषारण्य गोष्ठी चक्रु मनोमां तरन्ते महातेया व्यासशिष्यो महाशयः सूतो शिष्यगणयुक्तं समायुक्तो हरिस्मरणं सूतं चापि समालोक्यं सर्वशास्त्रप्राङ्गतः मुन्ये सर्वा समायुक्तं शौनकाल्पोतः स्वपि तान् सहसा भक्तानां मुनिपरं वैष्णवां नमां दण्डवत् भूमो धर्म सर्वविचार ब्रासाने बुद्धे तदन्तेस्तुवासः सोऽतो सर्वे शिष्यायुतां तदोभिष्टं तदं सूतं शौनाग्रे मुनिसंस्था बद्धालयां लम्बाजं प्रचुन्न विनते महर्षे वद सर्वज्ञ कलिकाले समागते केन उपान् भगवन् हरिभक्ते निपां कलो सर्व भविष्यन्ति पाप कर्माणायुक्तं वेद विद्याभ्यञ्चते सर्वे श्रेयं कथं भवेत् कालान्वन्ते प्राणालोका स्वकलिष्टां स्थिता धनक्षस्यन्ते भवन्ति नाना प्रपीडिताः प्रवाससानत सुकृतं शास्त्रेण प्रतिष्ठितं द्विजम् अस्तस्माकं केऽपि करिष्यामि कल्लो सुकृतं जना सुकृतस्ते विनश्यन्ति प्रवृत्ते पापकर्माणि सबंसा प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशयः स्वकल्पस्ते विलातिस्वस्थं यथा भगेन पुण्यता तथा कथं सूतं नमः यशोपदद पुण्यं पापं वा कृते जना तत्फलभागी भकृतम् इति शास्त्रे निर्णयः पुण्यदोस्तुति सकदं कीर्त च विवर्जितः अपापो न विरोधी च चत्वार केशमोपमः ज्ञानं संप्रास्ते संसारयः प्रभ्यो न यच्छन्ति ज्ञान रूपी हरितस्मन्ये प्रसन्नैव नेक्षते नाना रक्तं च युक्तो यः परसन्तोषा कृणहे स युक्तो यज्ञ अस्मने नन रूप धरो हरिः वक्त्रेण स्तप्ता से किं वा प्रप्ताने वांछित फलं तत्सर्वं स्वत इच्छामि कथम स्व महात्मने त्वमे मनो सर्धोला वेद वंग्या प्राज्ञा त्वयि कीर्ते नहि वक्ता यक्षन्ते व्यासो शिक्षिता श्रुतो वाच धन्यासो त्वयि मुनि श्रेष्ठ त्वमे वैष्णवो अग्ननहे यथा समस्त लोकानां हितकिं चे सर्वदा सुनो रक्षन्तु वक्ष्यामि सुनो श्रोतुमस्यन्ते नारदो नैव समृष्टां भगवान् कमलापति सूर्यस्य यथा वाहं त्रिक्षणो समाधिस्थिते अस्कन् पुराणे रेवाखण्डे प्रथमोऽध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। नम पुष्पम हम प्रतिगृहताम फिर फूल अक्षत लीजिए हवन करने के बाद या अग्नि छूने के बाद हाथ खुला जाता है। अथ द्वितीय अध्याय एकदा नारदो योनि प्रांगाक्ष पर्यतनम विविधा लोकानां मृत्युलोक आवहिता तत्तिष्ठ्वा सर्वे जना नाना कलेश समायुक्तं नाना योनि समुत्पन्ना क्लेशन्ते पाप कर्मा हि केनोपायन्तं चेतां दुख नाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचाते मनसा विष्णु लोक गत अस्तता तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदाधारं देववनमाला भुवयुस्तं त्रिशंता देवदेवस्य सस्तो समायुचक्रे नारदो वाच तस्मते बांगो अतीत रूप नरंतते सक्तते आदि मध्यान्त हिताय निर्भूतां निर्वतने सर्वेषां भूताय भक्तानां स्थान श्रुतो स्थितं ततो विष्णु नारद पृच्छन्ते श्री भगवान उवाच किमर्थं स्वपि तत्किन्ते मनसति वर्तते गच्छन्ते श्री महाभागं तत्सतं कथमिमे नारदो वाच मृत्युलोके जना सर्व नाना शोक समायुक्तं नाना योनि समत्पन्न क्लिश्यन्ते पाप कर्माणि कथं सक्मे नाथम लघुपायं तत्वं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृतां तदेपे महि श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठं त्वयि वत्सं लोका अनुग्रहम् अक्षकः यतं कृत्वा मनुष्यन्ते मोहात् क्षणे पदापि मे वर्तं समस्ति महापुण्यं स्वर्गे मृत्यो च लब्धं ये अस्मिहाभि विप्रं प्रकाशे क्रियन्ते अधुना तत्सर्वा यक्षन्ते वर्तं समायुक्तान्त कीर्ते सदं सुखं भिक्तां परं मोक्षापायतां रक्षन्तु भगवान् नारदे नुक्ताय नारदोवाचं किं फलं किं विधानश्च कृतं केन च तदं व्रतं तत्सर्वं विस्तारं वे ब्रूहि कथः कार्यं हि स तदं व्रतं श्री भगवान् उवाच दुःख शोक दुष्समिदं धन धान विमृदनं सौभाग्य सन्ति करम सर्वत्र विजयप्रदं यक्षन्ति काश्यन्ते तर्वो भक्ति श्रद्धा समायुक्तं श्री सत्यनारायण देव यक्षन्तो नशामक बान्धुबढ़ च सहिते धन प्राप्त नैवेद्यं भिक्तो दधापाद भक्ति युक्तम समायुक्तम रस्मा फलम घृतम क्षीरम गोदूधम च चूर्णकम अभागेशाली चूर्णम च शर्करा च गुणम तथा प्रसादम सर्वभक्षानि चौकी कृतम निवेदितम विप्राय दक्षिणां दत्त्वा कथम श्रुत्वा जनैः सह तत्सर्वं बन्धुभिः सार्ध विप्राय प्रतिपादते प्रसादं भक्षे कृत्वा नित्यज्ञातिं चरेत् तत्सर्वं स्वगृहे गच्छे सत्यनारायण स्मरणं तब कीर्ते मनुष्याणां वांछित सिद्धि भवेत् ध्रुवम्
विशेषते कलियुगे नानायुक्तं भूतले कथां शक्यते प्रक्षामि कीर्तमेन पुरामहे कसञ्चि रमे निर्धने सुधा भूतले नित्यं रक्षामि भूतले भूतुक्तं प्रणामि दृष्ट्वा भ्राम्नः वृद्धब्रह्मण रूपे प्रजाय दुत्मतां किमर्थे भवरे विप्रमहे नित्यं स्वशुद्ध तत्सर्वं स्वधिकित्यादि कदि रोचते बभोगा ब्राह्मणति दुर्गाय वैब्रह्महिं उपाम यदि जानासि कृपा कथं प्रभो वृद्ध ब्राह्मण उवाच श्री सत्यनारायण देवो वांछित फल पाद पश्यन्तु द्विसादुलं कुसुमे व्रतं मतां यत्कृपं सर्व दुखो मुक्तो भक्तो मानव विधानं च विप्राय भाषयतने सत्यनारायण वृद्धगिदार्थ तत्प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि निश्चितम् इति सांचते विप्रो रात्रो निद्रा न लभतां तथो प्रातः स्वतः सत्यनारायण व्रतं करिष्येति संकल्प्य भिक्षां दत्तं द्विज तस्मै दिने विप्राय प्रचुर दत्तां तेने बद्धु सार्धे सत्यनारायण व्रचार सर्वोक्तानि सर्वसम्मायुक्तं स प्रभो द्विसुरष्ट भक्तास्य प्रभावित तथे प्रभृति काले च मासी मासी कृतं व्रतं श्री भगवान उवाच एवं नारायण स्मन्तो व्रतं कृत्वा द्विसुरष्ट सदानंद ब्राह्मणस्य कुटुम्बः सह पूजनं सर्वपाप विमर्तो लब्धे मोक्ष प्राप्तं व्रतं चेदं यदा विप्राय पृथ्वी संचारति तथा सर्व दुखम च मनुष्य स विनश्यति स्कंद पुराणे रेवाखंडे द्वितीय प्रेम सुलेसी सत्यनारायण स्वामी की जय। इदं ध्यान पुष्पम हम प्रतिगृह्यताम् पुष्पम अक्षतम् अथ तृतीयोऽध्यायः श्रुतोवाच एवं नारायणोक्तं नारायण महात्मने मया कीर्तितं विप्र किन्यन्ते कथयामि शौनकोवाच ततो विप्राय व्रतं किं कृत्वां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतिष्यामि सदास्माकं प्रजाते श्रुतोवाच शृण्वध्वं मन्मे सर्वे संस्कृतं मुने एकदा सह द्विजनो निजीवितम् अनुशान्तरं बन्धुभिः सह जने सार्धं व्रतं कृतं सवितं एतस्मिन् काले तु काष्ठक्रेता समागतः बहि आकष्ट संसप्त विप्राय मंदिरो यः सुधा पिबीता स विप्रो दृष्ट्वा तथा विधं प्राणित्यज्य द्विजं प्राह किस्मिन् किरे तथा कीर्तये किं प्राप्नोति विस्तां मे प्रभु विप्रोवाच सत्यनारायणस्मेद्यं व्रतं सर्वेस्तिं प्रदं शोक दुख दिनश्चने सर्वत्र विजय कामनं यस्य प्रसादेन सर्वं धनधान मृतं तस्य द्विचं श्रुत्वा काष्ठकरेण पापो जलं प्रसादं त भुक्त्वा तत्नगरायण तत्सत्यनारायणं देवा चिन्तयते स्थिरमानस काष्ठो विक्रान्तो ग्रामे प्राप्ते चादनुद्युतं तस्यैनं सत्यदेवस्य करिष्यसे व्रतं युक्तम् इति सञ्चिता मनसा कष्टं धृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्यानगिनां धनिनां यत् संसिता तद्धने काष्ठमूलं च दुग्नं पत्पास्ते तत्प्रसन्न हृदये सुपक्यं कदलीफलं सर्ग्राघ्रे दुग्धं च गोधुधं च चूर्णं कीर्तवद्यन्ता सपादं च घृत्वा स्वगृणयत ततो बन्धु साहुकार चकार बिर्नामृतं तक्षर्सन्ते प्रसानं धन्यपुत्र अभूवत् हि लोके सुखं विगत्वा चान्ते सत्यं प्रमेयो अनत्य प्रख्यामि शृणो मुनि संस्थां स्कन्धपुराणे वाखण्डे तृतीयोऽध्यायः प्रेम सुलेसी सत्यनारायण स्वामी की जय। पुष्प अक्षत अथ चतुर्थोऽध्यायः श्री सीतोवाच आसीत् दुर्गा मुख नाम निपीतां जितेन्द्र सत्यवादयो देवगाय दिने दिने धन्यं वित्वा द्विजा सन्तुष्टि भर्या तस्य प्रमुदा च सरोज वन्दना सती भद्रशीला नदी तीरे तस्यं प्रत मातम एतस्मिन् तीर्थे साधु एक समागता वाणिज्य स्मर्थे बहुधन रत्ना परिपूर्णता नाभं संस्थाप्त तीरे जवन्त दतं प्रत्य दृष्ट्वा तवर्तं भूप्रं प्रवीक्ष्य विस्मयन्ति रसादो वाच किमर्षे कुसुमे जानम भक्ति युक्तम तेषां प्रकाशय कुर्वे तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि संप्राय राजो वाच पूजनं क्रियन्ते साधु विष्णुराजस्येत्लवर्तं ससुजने सार्धं पुत्रवान्तिक कंक्षाया प्रत्यो वाच ततो नातरानं मधुरं वचनं सर्वं कथु मे राजनं प्रतिवहतं ममापि सन्तस्ते एक्तन्ति ध्रुवं ततो निर्पाते वाणिक्सन्तो नन्दो गृहम् आगतः भर्याय कथिं सर्वं वर्तं सन्ततिदायकं तदा वर्त करिष्यामि तदा वे सत्यं सन्ततिर्भवेत् अल्पकाले गते तस्य भया लीलावती सती गर्वयुक्त स चन्दितः धर्मपरायणः पुण्ये गर्भे ततो जाता बालिके जाता निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्ल पक्षे यथा शशि तथो वाणिक सुतक्षन्ते जातकर्मं समाख्यं नाम्ना कालावती चिन्ति नाम्नांके कृतं ततो लीबालवती प्रवाप स्वामित्रं पृथ्वी करोषि न किमर्थं वैपुरा संकल्पित वर्तनं साधुवाच विवाह समय हत्या हरिष्यामि करिष्यामि व्रतं प्रिय इति भर्या स्वयसाय जमाम नगरं प्रति ततः कालावती कन्या विवृते
प्रतिवेशमणि दृष्ट्वा कन्या ततः साधु नगरे सखी विचा मंत्रित्वा दूतं प्रेषमास धर्मितं विवाहितं च कन्या वर्णं कृष्णं विचार तेन्या प्रदूतोक्ष कांचन नगरं यन तस्माक्यं बाणिकपुत्रो समायागतो न हि से दृष्टा तु सुन्दरं बालकं बाणिकपुत्रो गुणायत जात्यं सार्धो परिजन्तु तेषां हितां कस्य तस्मै विनान्त ततो अभागवेस्तेन विविष्टं वृतां विवाहे समय तस्याय रुष्टो भगवन् प्रभु तथा काले नित्यो निष्कर्मं विसारत वाणिजक्षां शीघ्रं जमात् सहितो वाणिका रत्नसागर रम्य गत्ता सिन्धु समीपता वाणिकज्यो में ततिष्ठां श्रीमता सह एतस्मिन् काले तु सत्यनारायण प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञा विलोक्य शापं देतं प्रतवान् दारुणं कण्ठित्यः चाक्षं महदं दुःखं भविष्यति तस्मिन्नेव दिने राज्ञा धमकात तस्करः तदेव वर्तमानः यात पृष्ठदेवे विलोक्य तत्पश्चात् दूतानां दृष्ट्वा भूतले तेषां धनं संस्थाप्य तथा तु शीघ्र लक्षितः ततो दूतादिष्टा यशन्तु वाणिका दृष्ट्वा निर्विघ्नं तो विघ्नते वाणिकसूत्क हर्षयुक्ता धानक्षतं ध्रुवचो तिष्कारिक गाने समायुक्त विलोक्य तेन संसिता शीघ्रयुक्तं बन्धुते संस्थापितो दुर्गा करागारे विचार स्कंदपुराणे वाखंडे चतुर्थरा प्रेम सुलेसी सत्यनारायण स्वामी की जय। इदं ध्यान पुष्पं समर्पयामि। पुष्प अक्षत ले लीजिए। अथ पंचमो अध्याय सूतो वाच माया सतदेवस्य न श्रुतो तयो पर्चय तत् अस्तयो धर्मयक्ष गृहाणां चंद्रकेतूनां दक्षन्ते पाच्च यगो गर्भे भार्या गृहे दीप्तां सुता चोयन अभ्यते स्वगृहे यच्छतो सिंस्ता धनम् आदि व्याधि समायुक्ता श्रुतो विभ्रष्टा समाकुला चिंता भूत्वा औरं च गृहे गृहे हे कालावती कन्या भ्रमां प्रतिभाता एतस्मिन् काले राक्तो चान्दिमन्यं गत्वा प्रसीदा वर्तं च सत्यनारायणस्य च ओ विषये कथां श्रुत्वा प्रसाद वृक्षं कृत्वा यतो रात्रौ गृहे प्रति तथा लीलावती कन्या भर्ता मां स्मृतं पुत्री रात्रो स्थिता कुत्रते मनसति वर्तते कन्या कालावती प्रभाव मात्रः सदी प्रतिसाद्रं द्विजले बातमष्टला वांछित सिद्धिकं तक्षुण श्रुत्वा कन्या वाक्यं भर्तं कृतो सन्निता सामुत्वा च मानिक भार्या सत्यनाथ च भर्तं कृते सर्व साधि बन्धवो स्वजनः भारती मात्रो विच्चं शिवनाम इति दिव्य ब्रह्म प्रवेश तुरे पुनः पुनः अवरासं कीर्तान रक्षन्तु वर्ते संस्तु सत्यनारायणाय प्रभु दर्शनाय स्वप्ने हि चंद्रकेतु नृता बाणिर्मुचिता प्रवन्तु निष्तां देवा हि धनां सचिगिरितां न चेत्वा नास्यान्यस्यामि च उत्तमेव सराजना धनयागद्य तथा प्रभात समय राजा स्वजने स उपविशय समामध्ये प्रभाव मंत्री जनापति बद्धो महाजनो शीघ्रं मोच्य दो बाणिक सुतः इति राज्ञो वचनं श्रुत्वा मोचित्वा महाजनो सामज्ञान निवस्ताय प्रभवो विच्यते अनित्यो द्वय बाणिक पुत्रो मुक्तो निदात्य ततो महाजनो नित्वा चंद्रकेतु नरतं स्मर्तो पूर्ण विस्तार नृत्यन्ते भेलो राजो बाणिक पुत्रो विच्छय वच प्रवाच सादरं छलकर्तार वच अलंकार दत्ता परि स्वस्तस्य निष्पणत रुष्कृतस्य बाणिक पुत्र वत्ता स्वपि श्रुतं नाथो च भक्त दरिद्रं द्रव्यवृत्तां गतवान् प्रोच ततो राज्ञा गच्छ साधो निजात् आश्रमं राज्ञानां प्रति गत्वा गन्तः तत्प्रसादे कृत्वा तो महाजनो जन्मतः स्व कृति स्कंद पुराणे वाखंडे पंचमो अध्याय प्रेम सुरेशित सत्यनारायण स्वामी की जय। इदं ध्यान पुष्पं समर्पयामि। लक्षण ले लीजिए। अष्टोध्यायः लेकर के अक्षर लेकर के हाथ जोड़िए। अष्टोध्यायः सूतो उवाच पूजा त्वं कीर्ति साधु मंगलाचार पूर्वकं ब्राह्मणभ्य धनं दत्त्वा तदा तु नगरं एव किंचित दूरं गत्ये साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासाय कीर्तमंसतो त्वं नस्माहितं ततो जान मोहहिल्या प्रभाव कथं इच्छसि दो दण्डिः मुद्राने तु किमच्छसि लत्तापत्रादिकं चैव वर्तते तर्णमं निष्ठुरं वत्सं सृष्ट्वा सत्यं भवतु वेच एकन्त्वात् शीघ्रं दण्डी तस्य समीप किञ्चित् दूरं गतो विश्वा स्थिता सिन्धु समीप गते दण्डी साधुश्च क्रियन्ते सदा उत्थित्वा तर्णं दृष्ट्वा विचारणं पर्णं ययो दृष्ट्वा लत्तादिकं तत्र वञ्चितः नित्वापतं लब्धे बाणिकपुत्रो भृश्य चिन्तो अभूवत् तथा तु दग्निकान्तो वच्चं चेद्व्रतं किमर्थं क्रियते शोकं पापो दत्तश्च दण्डिता सकत्ये तेन सर्वाहि परन्तु चात्र संशय असंतोष न मामि वंशतो भविष्यति क्षमा कर्ता न श्रुत्वा तस्मात् कदता तत्
दृष्ट्वा च दण्डिरा भक्ता नीत्वा प्रोवाच सादरं क्षमस्व च अपराधं वे युक्तं तव सन्निधौ एव पुनः पुनरोक्तं महाशोक आलो भवत् प्रोवाच वचनं दण्डी विलोक्य च मां रोदि शृणु मे वाक्यं मम पूजां बहिर्मुखः ममेच्छन्सु च दुर्बुद्धे बुलब्धं द्वं मनोमोह तत्सित्वा भक्ताये सुस्तुति कृतो समदः साधुवाच तिस्र मोहिता सर्वब्रह्मणे दोष्ट न जानाति गुणं रूपं तस्मन्ने प्रभो मूढो अहं कथं जानामि मोहत मायायाः प्रसीद पूज्यामि यथा युक्तं पूजाविदं चरितं त्राहि मां सनागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन वञ्चितो वञ्चिते तिष्ठो तथा वनं हरिप्रिय ततो नावसमर्ध दृष्ट्वा वृत्तं परिपूर्यनं कृपयां सत्यदेवस्य सफलं भाजनं वञ्चित मम इकित्वा स्वजने सार्धं पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेण स्वापे वित्तं सत्यदेवा प्रसाद नवं संयोजयतने स्वजेतं गणं कृतं ततो जमात्र प्रभाव यक्ष यत्नपुरी मम दूरं च प्रेक्षामि निजिमितस्य रक्षकं सदूतो नगरं गत्वा साधु भार्या विलोक्य प्रवाच वंशित वाक्यमित्वावल परित्राणिक्ते नगरस्य जमातो सहितो वाणिक आगतो बन्धुवच्च वित्तस्य बहु भृत्यः श्रुत्वा दूत मुख्यायावक महा हर्षवती सती सत्यपूजां तथा कृत्वा प्रवाच तनुजां प्रति ब्राजीक्षिक अगच्छं श्री साधु दर्शनाय च इति मातृवचनं श्रुत्वा वचनं कृत्वा समीप्य प्रसानक्षा प्रत्यज्य गतो स्वपि पतिप्रतिं तेन दृष्ट्वा सत्यदेव भर्तारं तर्जिं तथा सहस्त्रं च चनस्य धनं च जले आत्मचमस्तः तथा कालावती कन्या न विलोक्य निजं प्रति शोकेन महत्ता युक्ता रुदन्ती चादभुवो दृष्ट्वा तथा विदो कन्या विलोम्बौ दुःखितां भीतेन मनसा स किचन्ते भवते चिन्ता मे सर्वैवतं ततो लीलावती कन्या दृष्टो न विलो अभवत् बिलाटपति दुःखेन भर्तारः चेदं प्रतिवृताम् इदामी नौकायां सार्धं कथं सोलभिवक्षिता न जाने केन दिव्यः विलाचव तत्कीर्तं सत्यदेवस्य महात्मने ज्ञातु वे केन शक्यते इत्यन्तु विलेपतस्य स्वजने ततो विलाय क्रियाय किरदो भोजनं ततो लीलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुःखिता घृतां पादिकौ तस्य अनुवनचनो मदो गद्ये कन्या सन्ति दुष्टा सौभाग्ये सन्नो बालिकम् अतिशोकेन सप्तन्त्यति धनवितं हृदये वा सत्यदेवान् भ्रमोति सत्यमायाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विवृते इति सर्वस्तां कथ्यं च मनोर्थ नत्वा च दण्ड्यो भुवो सत्यदेवः पुनः पुनः तत्सितं सत्यदेवो दीवानां परिपालकः प्रोवाच वचनं चेत् कृपायां भक्तवत्सल तक्कित्वा प्रसाद सा देव कन्या प्रति दृष्ट्वा समागता अतो दृष्ट्वा अभवत् कन्याया प्रति दृढं गृहं गत्वा प्रसीदन भुक्यता चाहति चेत् पुनः लब्धां भृति श्रुत्वां साधु भविष्यति न संशय कन्याया श्रेष्ठं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डला क्षिप्रं विप्रं गिर गीत्वा प्रसादं भोजात् स तेषां स दर्शना निजला प्रति ततः कालावती दृष्ट्वा जगाद पित्रं प्रति इदामी च गहनां याहि विलम्बे कुसुमे कथं तक्षु श्रुत्वा कन्या सुन्तो भवितं दृष्टानुजमाम मंदिरं मासी मासी संक्रांति व्रतं कृत्वा यथा विधि इलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यं प्रयो अनाथ्यं च पृच्छामि शृणोध्वं मनुस्संस्कृतास्कं पुराणे वाखण्डे खष्टोऽध्याय प्रेम सोलेसी सत्यनारायण स्वामी की जय। इदं ध्यान पुष्पं समर्पयामि फूलक्षतम्। अच्छा है जो नहीं लगता चलिए एक अध्याय का ध्यान देखिए भगवान करे। ओत सप्तमोऽध्याय सुतो वाचासी तुम ध्वजो राजा प्रजापालक प्रसाद सत्यदेवस्य तुताम एकदा वनं गत्वा भगवतं स्वागत्य भट्टमूलस्य दृष्ट्वा सत्यपूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवा राजा दृष्ट्वा तु दर्पे न गतो न नमामः सः ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादानि सन्निधौ संस्थाप्य पुनः आगत्य भक्ते स स्तुतम् इदं प्रसादं सन्तस्य जना राजा दुःखमापस तस्य पुत्र शतं नष्टं धन धानिकं तं च यतं सत्यदेवस्तस्य नास्तं निश्चितम् अत अस्तप्य गच्छामि तत्र देवस्य पूजनम् इति संचत्य मनसे गोपाल सन्निधौ ततो सन्निध देवस्य गो पूजा गोपालस्य भक्तिरतो भूत्वा चकार विनाम निपम सत्यदेवस्य प्रसादेन धन पुत्रो अभवत् हि लोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् इदं रूपे सत्यदेवस्य परम दुर्लभं सुनोतो देव च कथा पुण्या भक्तियुतं फलदायकं धन्यधानितं तस्य भक्तिं सत्यप्रसाद दरिद्रो लभते वितं बन्धतो मुच्यतात् बन्धनात् भीतो भया प्रत्युच्च सत्यदेव न संशय इत्यन्तस्य
फलं भुगुत्वा चान्ते सत्यपुरं वर्चय इति वा कथितं विप्रा सत्यनारायणाय वर्तनं यत् कृत्वा सर्व दुःखियो भवत् मुक्तो भवति मानव विशेषतः कलियुगे सत्यरूपा फलप्रदा केचित् काले वदिष्यामि सत्यमीशं त्वमेव हि सत्यनारायण केचित् सत्यदेवं तथा परे नाना रूपधरो भूत्वा सर्वे इष्टं सम्पदा भविष्यति कलो विष्णु सतरूपी सनातन यम इदं पठे नित्यं सुतो मुनि संस्था तस्य न सन्ति पापानि सतदेव प्रसाद स्कंद पुराणे वाखंडे सप्तम अध्याय प्रेम सोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। धम ध्यान पुष्पम समर्पयामि। चलिए हो गया।